because others are not here, so we can study for half an hour. Huh? Yeah. Okay, no problem. Amonavi, Amonavi, dapre moi. Repeat after me. The very Monami, da promoa. for in order to increase the level. Je suis d'accord. Répétez après moi. Je suis. We use this pattern. Je suis d'accord. Je Je suis. suis d'accord. Je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord. Répétez après moi. Je ne suis pas. Je Je ne ne suis suis, pas d'accord. je ne suis pas d'accord. Yes. Je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je trouve que. Répétez après moi. Je trouve que. Je. Je trouve Je que. Je trouve trouve que. Now I'll listen to you. Repeat after me. Amonavi, according to me. Répétez après moi. Monami. Amonavi, you say, according to me, according to me. Répétez après moi. Yes, Amonavi, according to me. Monami. Amonavi, d'après moi. Répétez après D'après moi. moi, D'après moi, according to me. d'après moi, D'après moi, je suis d'accord. I je am suis d'accord. I'm totally okay with that now. For example, there is some document going on, and the Mhm. document belongs to something like inequalities between the female and the males, something like wherein you accept the document. Yes, this is right. I totally agree with the document. So je suis d'accord. I'm totally agreed. Je suis d'accord. Je suis D'accord. d'accord. I'm Suis is what totally? Suis, S-U-Y-S. I am at work. I am agreed. I am agreed. Okay. Je suis, we have done at verb. Je suis, tu es, il, elle Yes, est. yes. Okay. Yes, yes. Je ne suis pas d'accord. Ne pas. Ne pas, we have negation, my team. Ne pas. Ne pas is always we have a negation. Negation. I do not agree. So ne pas is my negation, and that's a rule. Between ne and pas, we have a verb. Je ne suis pas Okay. d'accord. Je ne suis pas d'accord. I do not agree. Je trouve que. Je trouve que. I find that. Je trouve que. Je trouve que. Je trouve que. I Je find that. trouve que. I Here's my find verb that. trouver. Trouver is my verb to find. Now you come to know. Trouver is my full verb to find. Trouver. Because now we have ear ending verb. So the formula is je trouve que. Clear? I find that. बोलो इसको आप je trouve que ये यूज करो आप Je trouve आप que. वहाँ पे हो ना अपने ऑफिस में हो कहीं भी हो सो बोलते रहो à mon ami d'après moi je suis d'accord je ne suis pas d'accord je trouve ये एक आपको ना बियॉन्ड एक डिफरेंट लेवल की ओर मूव करेगा आपका राइट नो je Yeah. trouve que répétez après moi je trouve que c'est Je une trouve que. bonne idée बोलो आप je trouve que je Je trouve trouve que que. c'est une C'est bonne une bonne idée. 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 Idée, we have idea. Idée. Very good idea. C'est une bonne idée. Je trouve que c'est une bonne idée. Je I, trouve I que. find that it is a good idea. Je trouve que I find that c'est une C'est bonne une idée. bonne idée. Claire, I find that this is a good idea. Repeat after me. Je trouve que Je Je trouve trouve que que c'est une bonne idée. Répétez après moi. c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, bolo. Je trouve C'est une bonne idée. c'est une, bolo, C'est une bonne idée. une bonne idée. Répétez après C'est moi. une bonne idée. Je Je trouve trouve que que c'est une c'est bonne une bonne idée. idée. C'est clair? Ouais. Oui, clair. Now répétez après moi. À mon avis, À à mon avis, d'après moi, d'après d'après moi, moi, je suis d'accord. je Je suis suis d'accord. d'accord. Je ne suis pas Je ne d'accord. suis pas Je d'accord. ne suis pas Je ne d'accord. suis pas d'accord. Je trouve que. Je Je trouve trouve que. que. Je ne. Ok. Je trouve que. Je trouve que. I find that Je trouve que c'est une bonne idée. C'est c'est une. une bonne idée. It means it is a very good idea. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je pense que.
बोलो आपको japonska, je, Japonska, 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 I think that. Jatruvka, I find that. Japonska, I think that. Because we have a verb ponce. Ponce is my verb to think. कि use करना है आपको. I, you know, in English also, I think that, I think that. Japonska. बोलो Japonska. Japonska, Japonska, Japonska. आप बोलो Japonska, Japonska. बोलो आप लैंग्वेज को. Japonska, Japonska. Japonska. Lauter a Japonska, raison. Japonska. Lauter. Lothar, Lauter. Lauter is my author. Now you are getting some topic. Lauter mhm, a raison. A raison. Lothar Raison Arno. we have right. And over here, a we have our conjugation. You know what is our conjugation? Je, tu, a. You know our conjugation. Avoir is my verb to Oh have, yeah, yes, right? So yes, je, right? Whenever you are saying in terms of you are right, for example, you are saying you are right. So I cannot use are with adverb. No. Are is my adverb conjugation. Tell me. yes, Adverb is my verb to is MR. Tell me. yes, Clear? But one thing you have to yeah, understand, whenever you are saying these type of things, you are right. I have to use our conjugation. Yes, pen down please. Whenever you are saying you are right, I don't think so. You are right. I am right. I have to use our conjugation. Beshak. Evidemment in English we have you are right. No, because that's a rule in the French language. I cannot say you are right and I will not use être verb. I will use always our verb and I will our say vous avez raison. You are right. Vous avez our conjugation. Vous avez raison. raison, Very clear. oui, If I'm vous saying avez raison, you, now I'm saying je pense que l'autre a. So that is we have il, elle, a conjugation. L'autre we have conjugate with il, elle, a. L'autre a raison. L'autre. So je pense que l'autre a raison. It means I think that the author is right, but I cannot say is are. I have to use our conjugation. Is it clear to you? yes, Okay. Now, répétez après moi. Je suis un peu partagé. Yes. Je suis. je suis, Je suis. बोलो आप. Je je suis. suis, Je suis un peu. je suis, Je un peu, suis un peu partagé. बोलो आप. partagé, Je suis un peu partagé. बोलो आप. je suis un peu partagé, Basically, my team, we have a verb partager. This is my verb. This is my verb, which is Partager. Partage is my verb to share. partagé, Share. I'm saying I am a bit sure that I am. Je suis un peu partagé. Basically, partage, if you want to share your ideas, partage is to share. Partager les idées. बोलो आप. Partager. partagé, Partager les idées. partagé, les idées, Les idées. It les means idées, share the ideas. Partager les idées. Je suis partagé un les peu idées, partage. Je je suis suis un un peu peu partagé, partager. It means that phrase. I'm little bit shared. Is it clear to you? Un oui, peu. Un peu. Un peu is little bit. Un peu. Un peu. un peu, Un peu is little bit. Is it clear to you? oui, Clear? Now, répétez après moi. Pour être honnête. Pour, pour pour être être honnête. honnête, Honnête. Very important. honnête, Very important. Pour être
Onet. 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 Lift up the Pour Onet. être honnête. Onet, we have onet. Onete. Onete. So we have a Honnête. verb. Yes, onet is something like to be honest. Onet. To be honest. हम बोलते हैं to be honest. बोलते हैं to be honest. I would say to be honest. Yes. तो यूज करते हैं, मैं बहुत यूज करता हूँ to be honest. To be honest. That is pour être honnête. Pour être honnête. ये पूरा Pour एक être verb, honnête. पूरा एक मेरा एक phrase है पूरा. साथ में ये भी pour être honnête. Ça me fait, बोलो, ça, ये Ça कुछ phrase है, me fait. that makes me. Ça me fait, that makes me. Why makes me? Have you done faire verb? Faire is my verb Yes, to we make did and to yesterday. do, right? So, Yes. ça me fait, that makes, ça is my that me is me, that makes me. बोलो, रिप यहाँ पे मोआ, ça, ये because language है जो आप Ça me सुनिए, fait. ça me fait, that makes me. Ça me fait un peu par, un A fait un peu. little bit per is my dar, afraid. I'm saying pour être honnête, ça me fait un peu peur. That makes me Pour little être afraid. honnête, ça me fait un peu Yes. peur. ये बोल, अब बोलो इंग्लिश में, to be honest, it makes me a little bit afraid. Now, if you have any Okay. story which contain, disadvantage, anything, no, pour être honnête, to be honest, and now, for example, the virus COVID-19, there's a virus COVID-19, so to be honest, it makes me a little bit scared. So what do you say? Now, for example, il y a des problèmes, Pour être la honnête, pollution, ça, the problem pour la réseau social, c'est la social networks. So pour être honnête, ça m'a fait un peu peur. Repeat it. Pour être honnête, honnête, ça ça me me fait fait un peu peur. un peu peur. C'est clair. It makes me a little bit C'est scared. clair. Mais, why? Why? Pourquoi pas? बोलो, mais why? Pourquoi Mais pas? ouais, pourquoi pas? Why not? But yes, why not? मैं is but, why is yes, pourquoi pas is why not. Pourquoi is why. So देखो, अब देखो एक बात को समझना. फॉर एग्जाम्पल इसका प्रैक्टिस करते पूरा, और आपको कोई टॉपिक आ रहा है और आप कुछ भी बोल रहे हैं, बोले आमो नावी अकॉर्डिंग टू मी. जैसे हम क्या करते थे जब हम लॉन्ग टाइम बैक इन इंग्लिश में, जब इंग्लिश लैंग्वेज में, व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, कोशेते ट्रे पति. In school time, we used to speak in Hindi and English both. Yes. Rule that if you not conjugate something in English, but try to use some portion of English, right? So the same your thing. You can do this. Amo navi according to me. D'après moi, according to me. Je suis d'accord. I am totally agreed. Je ne suis pas d'accord. I am not agreed. Je trouve que, I find that. Je trouve que c'est une bonne idée. I find that this is a good idea. Vous avez raison. You are right. Vous avez raison. You are right. Raison. Je pense que l'auteur a raison. I think the author is right. C'est clair. Je suis un peu partagé. I'm little bit shared. I'm little bit shared. Okay. Partager les idées. It means share the ideas. Pour être honnête, to be honest, pour être honnête, Honnête, ça ça m'a me makes me fait un peu peur. un peu peur. Un peu peur. Ouais, pourquoi pas? Pour être honnête, to be honest, it makes me a little bit scared. It makes me, ça me fait un peu peur. Mais why, pourquoi pas? Yes, why not? C'est clair. Very clear. So can you repeat the this is our word and has have I être and aber will. because we didn't do yesterday, I guess. I will. Repeat after me. Avoir is my verb to has have, right? Avoir. Avoir is my verb to has have. These are my irregular verbs. The moment I will conjugate my avoir verb with my present tense, that is j'ai is to I have. Bolo j'ai. J'ai, Is to you have. tu as, Uh, il, elle a.
nous avons, अच्छा ऊपर यहाँ पे य है, क्यों है? Basically we have sh is to I, but over we have to Vowels. so sh, tu as, il elle a, nous avons za, because Nous avons. we have to combine consonant Vowel. S No and consonant. Okay. consonant S and A. Claire? Right. Nous avons, Claire, vous avez, Vous avez. Claire, and il, elles ont, ONT. Claire? So left Right. आपने j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, Nous avons. vous avez, Vous avez. il, Elle a. elles ont, because SONT. Say Claire. Zone. Is it clear to you? Right. Right. Now we have verb être. We have verb être. Être. So être is my verb to is MR. Être. Claire? So Right. repeat after me. Je suis. Je suis. Tu es. Claire? Tu es. Il, elle est. Claire? Okay. Il, elle est. Je suis. Tu es. Il, elle est. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. Ils, elles sont. So repeat after me. Je suis. Ils, elles sont. Je suis. Il, elle Tu est. es. Il, elle est. Nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. Ils, elles sont. Ils, elles sont. Ils, elles sont. C'est clair. So Right. these are the conjugation. अब मैं je suis d'accord. Je suis, I am, je suis d'accord. Clair? ठीक है? Right. So ये बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे पता है अगर मनीष आप इस पे 1 आवर लगाओगे ना, सच में लगाओगे आप 1 आवर, क्योंकि आपके नए वर्ड्स हैं. Je pense que l'auteur a raison. I think the author is right. A raison. Raison is right. But raison, we have right. We have to use our conjugation. जब बोलूँ we are right. We are right. तो nous avons raison. We will use our conjugation. Say Claire. Right. Claire. So the thing is, जब आप basic phrase learn करते हो, उसके बाद अगर आप अब करते हो सेंटेंस फॉर्मेशन या कुछ करते हो, और उसमें रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आपने बेसिक ऑलरेडी फ्रेज जो लर्न किए हुए हैं, तो आप यूज कर सकते हैं वो वर्ड्स और वो आइडियाज जब आप न्यू सेंटेंसेस सुनते हैं और बनाते हैं. Exactly. उनमें ये हेल्प होती है. Yes. अब ये क्या है, दिस इज टेक्निक बेसिकली, क्योंकि टेफ का आपका पूरा टेक्निक काम करेगा आपका. क्लियर? तो ये टर्म्स का पूरा अगर आप रिवाइज करेंगे, जैसे आप बोलोगे pour être honnête, to be honest, ça m'a fait un peu peur. जैसे आप फॉर एग्जांपल वर्किंग इन योर ऑफिस, राइट, एंड यू से to be honest, it makes me little bit scared. कुछ भी ऐसा कुछ भी आप बोल रहे हो वहाँ पे कि सैलरी का थोड़ा इशू चल रहा है, बोलोगे to be honest, it makes me little bit scared. तो क्या बोलोगे pour être honnête, ça m'a fait un peu peur. सो ये आप कोई भी सिचुएशन अपने मन में क्रिएट करो, उसको बोलो आप. से क्लियर? ये बहुत सारे आइडियाज हैं जो डेफिनेटली आपको एक ड्रामेटिकली एक लेवल पे लेके जाते हैं, और जहाँ पे आप बोलते हो चीज़ों को, कनेक्टर्स हैं. क्योंकि ये चीज़ें आती हैं, देन यू विल नो हाउ टू मेक अ सेंटेंस. अगर यू विल कम टू नो, यू कैन मेक द लाइंस. क्लियर? Furthermore, obviously, je vous donne, I give you lot of conseil, lot of advice on this. Clear? Right. तो मैं ना ये आपकी वीडियो शेयर करता हूँ अभी ग्रुप में, ठीक है? Okay. स्टूडेंट्स नहीं है तो फिर आगे उनको फिर मिस ना हो जाए, ठीक है? Okay. इसका मैं अगर वीडियो आपसे शेयर करूँ, उसको देखो आप और अपना मुझे. Yes, for sure. और सर प्लीज, मैंने आपको कल भी बोला था कि वीडियो राइट अवे शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं राइट नहीं करता कुछ भी. जब आप करवाते हो बोर्ड पे, मैं बस समझता हूँ उस चीज को. राइट मैं तब करता हूँ जब बाद में वीडियो देखता हूँ अपनी नोटबुक में, क्योंकि अगर मैं साथ में अगर हम राइट करेंगे तो फिर आप जो समझा रहे हैं उस पर फोकस नहीं जाएगा. मिल गया था आपको कल वीडियो? मिल गया था कल? हाँ जी. ठीक है, कोई मैं भी भेजता हूँ. ओके. ठीक है. ओके, थैंक यू. ओके.